our guest speakers for this session. I welcome Dr. Ravikumar, General Secretary, National Dalit Forum, Hyderabad. And I also welcome Mr. Siddiqui Jamal, social thinker, Madhya Pradesh. He is already arrived here. And I also welcome Mr. Tanoj Meshram, our CEC member. And one more guest speaker, lady guest speaker is expected any moment. So now we are going to start our evening session. The subject is Planning Commission is planning to purge Mool Nivasi Bahujan Samaj in the name of poverty line. I request Mr. Tanoj Meshram to introduce the subject. साथियों, अभी जो टॉपिक रखा हुआ है ये है कि जो भारत में जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, ये जो योजना आयोग है ये गरीबी रेखा के नाम पर गरीबों का सफाया करने की योजना में संलिप्त है। पहली बार जो इस तरह की भाषा सुन रहे हैं उनको थोड़ा हो सकता है अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन काफी चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद सीईसी में हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि प्लानिंग कमीशन इस देश में वाकई ये काम कर रहा है। और ये संदर्भ इस चीज का ऐसा है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। संदर्भ इस चीज का ऐसा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया प्लानिंग कमीशन की तरफ से, जिसमें ग्रामीण भागों में 26 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और शहरी भागों में 32 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर है तो वो गरीब नहीं है, इस तरह का एफिडेविट फाइल किया गया। और इसके ऊपर काफी बवाल हुआ। अल्टीमेटली सरकार डिफेंस मोड में आके उनको ये बोलना पड़ा कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो हम बता रहे हैं, इसके बेसिस पे, इन आंकड़ों के बेसिस पे जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन हो रही है, इसके बेसिस पे किसी भी स्कीम का टारगेटिंग, मतलब किसी भी योजना के अंतर्गत जो लोगों को लाभ मिलेगा, इन आंकड़ों के बेसिस पे नहीं होगा। उसके लिए कुछ अलग पैमाने निर्धारित किए जाएंगे। और आश्चर्यकारक बात यह है कि इस 26 रुपये में ग्रामीण भाग में फूड, एजुकेशन और हेल्थ, मतलब आपका खाने का सामान, आपकी शिक्षा और आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस देश का प्लानिंग कमीशन इस तरह के आंकड़ों को लाकर इस देश का जो मेजॉरिटी समाज है, बहुजन समाज है, उसके साथ में किस तरह का मजाक कर रहा है। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है, क्या करना चाहिए, अगर हम इस नजरिए से इसको अगर देखें तो भारत ने जब प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था रशियन मॉडल के बेसिस पे, तब ये हुआ था कि इस देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो संस्था इस देश में, इस देश की आर्थिक नीति के लिए, इस देश के विकास के लिए कोई नियोजन करे, प्लानिंग करे, एक एक्सपर्ट बॉडी हो। इसके हिसाब से 15 मार्च 1950 को
कैबिनेट रिजोल्यूशन के बेसिस पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। और प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य दिए गए थे। एक था कि संविधान के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उस राइट्स और पॉलिसीज के स्पिरिट को रियलाइज करने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए जो करना पड़े, खासकर, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल 39 जो है, जो कि सोशलिस्टिक ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी को क्रिएट करना चाहता है, जो मंशा रखता है, उस आर्टिकल को कोट किया हुआ है उस रिजोल्यूशन में। तो इस राइट्स और प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन अपनी फंक्शनिंग करेगा और इस तरह का नियोजन इस देश के लिए करेगा और इस देश का फिर उसके हिसाब से विकास होगा। ये मंशा थी। बाबा साहब तो चाहते थे कि प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक, प्लानिंग कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसका वो महत्व समझते थे। लेकिन हुआ ये नहीं। प्लानिंग कमीशन एक बेसिकली कैबिनेट रिजोल्यूशन के बेसिस पे बनी हुई बॉडी है। आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो भी करता है अपने आप में एक स्वायत्त संस्था नहीं है। प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं, उसके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होती है। जो वर्तमान सरकार होती है, जो इस वक्त की सरकार होती है, वो सरकार जो है निर्देश देती है, उस सरकार के निर्देशों पे प्लानिंग कमीशन चलता है। एक्सपर्ट्स होते हैं वहां पे। जैसे गंगावने साहब ने कल बताया था, कोई भी संस्था जो है वो संस्था उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, उस संस्था में लोग होते हैं। तो इसी प्रकार इस देश का नियोजन करने वाली जो संस्था है, उच्च संस्था है, वो नियोजन करने वाली जो संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो लोग जो है एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो वर्ग इस देश की जो बहुजन जनता है, मूल निवासी जनता है, उसका विकास नहीं करना चाहते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का विकास करे। लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी अगर इस तरह से है कि वो आप लोगों का विकास नहीं करना चाहते हो, तो लोगों का विकास करने की बजाय आप क्या करोगे? आप ऐसे ऐसे तरीके ढूंढोगे कि लोगों का विकास कैसे ना हो। मैं अभी तक के जो वाइस चेयरमैन से उनकी मैं नाम देख रहा था, 24 वाइस चेयरमैन हुए अभी तक प्लानिंग कमीशन के। उस नाम में मुझे बहुत, हम लोग एक दो डॉक्टर सत्यपाल भी बैठे, हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कौन होंगे मूल निवासी बहुजन समाज से। तो एक मिले थे एसबी चौहान जो महाराष्ट्र के थे, जो गृह मंत्री बने बाद में, और एक थे माधव सिंह सोलंकी, एंड आई होप माधव सिंह सोलंकी कम्स फ्रॉम द मूल निवासी बैकग्राउंड। दूसरे नाम हम नहीं पहचान पाए 24 में से। करीबन 100 से ज्यादा मेंबर्स हुए हैं इसके प्लानिंग, हर प्लानिंग कमीशन में 5 से 6 मेंबर्स होते हैं, और उस मेंबर्स को भी आइडेंटिटी देखोगे तो आपको 85-15 उधर मिलेगा, मतलब 15% आपको हो सकता है बहुजन मूल निवासी मिले और 85% वो लोग मिले। प्लानिंग कमीशन में कुछ प्रिंसिपल एडवाइजर्स और एडवाइजर्स होते हैं जो अप्रोच पेपर और प्लान का इनिशियल ड्राफ्टिंग करते हैं। उनकी भी अगर आप कंपोजिशन आज की डेट में देखोगे तो आपको लोग नहीं मिलेंगे। उसके बाद में कुछ स्टीयरिंग कमिटीज होती है और एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, जिनको कई बार सब ग्रुप या कोर ग्रुप बोला जाता है, और वो काफी पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी बॉडीज होती है, नॉमिनेट की जाती है। जिसको मर्जी आप उसमें नॉमिनेट कर दीजिए। उन बॉडीज की कंपोजिशन देखिए, उसमें आपको मूल निवासी लोग नहीं मिलेंगे। प्लानिंग कमीशन कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। अगर वो कंसल्टेंट के हायरिंग का क्राइटेरिया देखेंगे, बहुत ही फ्लेक्सिबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। वो कंसल्टेंट का प्रोफाइल चेक कर लीजिए, सोशल बैकग्राउंड, वहां पे भी आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि इस देश का विकास के लिए, नियोजन करने के लिए जो संस्था है, वो संस्था, जैसे हम जुडिशरी के बारे में बोलते हैं, ये संस्था लगभग सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल टाइप के काम करती है। पिछली बार मैं दिल्ली गया था, मेरे एक दोस्त है एक वरिष्ठ पद पे प्लानिंग कमीशन पे, ही वाज टेलिंग कि मैं जब प्लानिंग कमीशन में आया था तब मेरी बहुत इच्छा थी कि बहुत बढ़िया बॉडी है और बहुत अच्छा काम करती है, करना चाहिए वगैरह, काफी पॉलिसी लेवल पे वगैरह। लेकिन 2 साल के बाद मुझे लगा कि इस देश का नियोजन अगर इंप्रूव करना है, प्लानिंग इंप्रूव करना है, तो पहले इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। तो ये हालत है। इसलिए ऐसे संस्था से ये अपेक्षा करना कि इस देश के बहुजनों का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि प्रियम्बल पे हमारी जो ये है, उनका विकास करेगी, ये मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अपेक्षा होगी। रूलिंग क्लासेस नहीं करना चाहते, और इसी तरह से इसका
प्लानिंग किया हुआ है, इस संस्था का प्लानिंग किया हुआ है। डेमोक्रेसी में अगर जनता का भला हो, कल्याण अगर हो, तो उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है, मुझे ऐसा लगता है। एक होती है इंटेंशन ऑफ द रूलिंग क्लास, जिसको हम नियत बोलते हैं। सेकंड होती है प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक साइड, सिटीजन्स प्रेशर ऑन द स्टेट। तीसरी चीज हो सकती है अगर रूलिंग क्लास कुछ चीजें करना चाहेगा, अगर उसके अपने इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व, जिसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट थ्योरी बोल सकते हैं। अगर हम नियत की बात करें रूलिंग क्लास की, हमको उनकी नियत मालूम है, नियत खराब है। अनफॉर्चुनेटली इस देश का जो बहुजन समाज है आज की डेट में, ना ही वो कॉन्शियस है, जागरूक है, और काफी हद तक वो इग्नोरेंट भी है, अज्ञान में है। इसलिए नागरिकों का राज्य के ऊपर, रूलिंग क्लास के ऊपर जो प्रेशर है वो इतना नहीं है कि रूलिंग क्लास उनका जनता का कल्याण करे। तो फिर होगा क्या? वही योजनाएं आएगी, उसी तरह के प्लान्स आएंगे, उसी तरह के संसाधनों को लाया जाएगा, संसाधनों को उन्हीं कामों के ऊपर लगाया जाएगा जिसमें रूलिंग क्लास का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो। मतलब अगर गरीबों का उद्धार करने में अगर रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं होगा। एनआरईजीए में मिनिमम वेज आप नहीं देना चाहोगे, नहीं होगा। एजुकेशन के ऊपर आपको 6% स्पेंड करना चाहिए, आप नहीं करेंगे। अगर 6% करोगे भी तो उसका अल्टीमेट जो फिजिकल आउटपुट ऑन द ग्राउंड है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है कि इस देश का बहुजन समाज जागरूक नहीं है और रूलिंग क्लास की नीयत खराब है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रादर देन वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इस देश का प्लानिंग कमीशन जो है बहुजनों का, मूल निवासी बहुजनों को सफाया करने में लगा हुआ है, उसकी योजनाएं हो रही है। हमें लगा ये एक बात का मसला नहीं है, सिर्फ अभी की पॉवर्टी लाइन का मसला नहीं है, बहुत सारी चीजें हो। एजुकेशन को सेक्टर का अगर देखिए, आज एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है उसमें अगर आप देखेंगे, हेल्थ में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा अगर आप देखेंगे, पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा अगर आप देखेंगे, तो अगर आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण लेंगे तो ये ऐसी चीजें हो रही है कि जो इस देश के बहुजनों के लिए हितकारक नहीं है। अर्थात योजनाएं उनके हित के लिए नहीं बल्कि उनके हित के अगेंस्ट बन रही है, उनको मारने के लेवल पे ले जाने के लिए बन रही है। हमें लगा ये काफी गंभीर विषय है, इस विषय पे हमने सोचना चाहिए। आज हमारे पास हमारे वक्ता आए हुए हैं, बोरकर साहब प्रेसाइड कर रहे, वो फैक्ट्स और फिगर के साथ में, उदाहरणों के साथ में इस मुद्दे पे पूरी तरह रखेंगे। मैं समझता हूँ यही एक स्पिरिट था प्लानिंग कमीशन की इस भूमिका को यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Mr. Tanoj Meshram. Now I request our guest speaker, Dr. Ravikumar, General Secretary, National Dalit Forum, Hyderabad, to put his views on this occasion. साथियों, सबको जय भीम। मैं अपना विषय रखने से पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद में रहने वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है। अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, अगर हिंदी में भी कोशिश मैं करता हूँ। अगर उसमें कुछ गलती होने से क्षमा चाहता हूँ। साथियों, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ। मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस, जो पर्यावरण का सब्जेक्ट है, उसमें मैंने पीएचडी किया हूँ। मगर साथ साथ में जब हम 1990 में जेएनयू गए थे, उस समय हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें
दलित स्टूडेंट्स का जो माहौल है वो बहुत खराब है। जितने भी दलित स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टीज में वो भरा हुआ है। एसएफआई में कुछ लोग हैं, एआईएसएफ में कुछ लोग हैं, एनएसयूए में है, एबीवीपी में है। ऐसा करते हुए जितने भी दलित स्टूडेंट्स हैं सब लोग हर एक पार्टी में कोने कोने में बैठा हुआ है। तब हम लोग ने सोचा, विचार किया कि ऐसा रहने से हम अपना जिम्मेदार नहीं निभाएंगे। जो दलित समाज ने हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर स्टूडेंट्स होते हुए नाते हम लोग अगर उसको निभाना है तो हम लोग अपना विचारधारा को सामने लेते हुए और उस विचारधारा को आधार पर हम लोग अपना संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है सोच करके हम लोग ने 1990 में यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम यूडीएसएफ नाम से एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया था। उस संगठन का उद्देश्य है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना समाज विकास के लिए क्या कहा उसको बारीक से चर्चा करना, समझना और उस मशाल को लेके आगे बढ़ना एक चीज़ है। और दूसरा है कि जो तत्कालीन में देश में जो भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है उसको लेकर के दिल्ली में उस विक्टिम्स के साथ में हम लोग कुछ मदद एक्सप्रेस देने के लिए इस संगठन को बनाया था और वो अभी भी अच्छा चल रहा है। हम लोग ने एक निर्णय लिया था उस समय, हम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में कभी लड़ेंगे नहीं है। इसलिए कि अगर स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स में जाने से, इलेक्शन पॉलिटिक्स में हम लोग अपना जो विचारधारा है, जो अपना विशेष रूप से हमारा जो जिम्मेदार है उसको हम ठीक से नहीं निभाएंगे सोच करके यूडीएसएफ को हम लोग ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रखा, ताकि यूडीएसएफ में जो भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग एक ऑब्जेक्टिव रूप से बाबा साहेब का विचारधारा को समझना है और समझ करके उसको लेकर के वो जो भी अपना ज़िंदगी में बनेगा उस स्तर पे रह करके वो अपना जिम्मेदार निभाने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए। तो उसके बाद जो मेरा पर्सनल लाइफ में हुआ, क्योंकि एक तरफ यूडीएसएफ के मेंबर हैं तो दलित स्टूडेंट्स का तरफ से हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई करना पड़ता था। उसकी वजह से मेरा पीएचडी मुझे नहीं मिला। मेरा थीसिस बन गया है, फिर भी अंत में मेरा प्रोफेसर ने मेरा पीएचडी को पास नहीं किया था। तो आई एम नॉट ए डॉक्टरेट, जैसे भाई साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मगर मैंने मेरा एमफिल किया है और वो भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में कुछ पेपर्स आए और उसके बाद पीएचडी भी किया है इन्वायरमेंटल साइंसेस में। तो हमने उसको छोड़ करके जो बाबा साहब ने जो कहा उसको लेकर के हमने आगे बढ़ा। तो अभी हम 2000 से ये नेशनल दलित फोरम के साथ जुड़ा हुआ है। नेशनल दलित फोरम एक एनजीओ मंच बनाया, क्योंकि जो वैश्वीकरण हो रहा है 90 में, उसका वजह से जो भी अपना दलितों का जो भी इश्यूज हैं वो लोकल स्पेसिफिक बन करके कोई नेशनल वॉइस नहीं खत्म हो गया। तो उसको बनाने के लिए ये एक फोरम ने बनाया, ताकि अगर देश में कोने कोने में जो भी होता है तो बाकी देशवासी उस लोग को मदद देने के लिए, और ख़ास करके नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी और कानून कायदा बनता है उसके ऊपर एक दलित सोच विचार रखने के लिए ये फोरम का मुख्य उद्देश्य था। तो इसको लेकर के हम लोग ने पॉलिसी एडवोकेसी और पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने काम करता रहा। और ख़ास करके पिछले 4 सालों से हमने ये प्लानिंग कमीशन के बारे में ध्यान दिया है। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है इसमें, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का हम लोग ने जो सोचा, बाबा साहब ने भी उसके बारे में, बाबा साहब की भी बहुत उम्मीद था। आपको याद है बाबा साहब ने ला मंत्रित्व पद से उन्होंने इस्तीफा दी। उसके लिए कारण यह है कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, और दूसरा कारण यह है कि बाबा साहब का आशा है कि
वो प्लानिंग कमीशन के अगर डिप्टी चेयरमैन बनने से इस देश का जो दशा दिशा निर्देश कर सकता है, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर भी प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत वो अपना काम करते आया है। मगर ये प्लानिंग कमीशन कर क्या रहा है, प्लानिंग कमीशन करना क्या है, उसको देखने से उस जमाना में जब प्लानिंग कमीशन का जो उद्घाटन हुआ था, वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड लेकर के देश का उन्नति के लिए, प्रगति के लिए योजना बनाना और इस योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा का प्राप्त कराना, एलोकेशंस करने का प्लानिंग कमीशन का सिंपल सा उद्देश्य। मगर जैसे भाई साहब ने कहा, प्लानिंग कमीशन में लोग है कौन, वो कहां से आया, वो लोग क्या कर क्या रहा है, उसको देखने से पता चलेगा कि अभी तक जितना भी प्लानिंग कमीशन मेंबर्स बने हुए हैं और अपना भी लोग डिप्टी कमीशन चेयरमैन भी बना है, मगर जो बाबा साहब ने सोचा वो नहीं हो रहा, होगा भी नहीं है। दूसरा बात है कि प्लानिंग कमीशन से ऊपर और एक बॉडी है, उसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीसी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन के ऊपर का बॉडी है, जो एक्चुअली उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखने से हमको लगता है कि दैट इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ इंडिया। इस देश का जो आर्थिक गतिविधि और आर्थिक इकोनॉमिक डायरेक्शन को सेट करने वाला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में हमारा प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रों का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री में जितने भी लोग हैं, ये सब लोग उसमें शामिल हैं। जो भी पार्टी है का भी हो, कहाँ से भी हो, फिर भी ये सब लोग मिलकर के देश का जो प्लानिंग कमीशन से जो रिकमेंडेशंस आता है उसको फाइनल करने का, उसको अप्रूव करने का ये एनडीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनडीसी अभी तक 56 मीटिंग्स किया है। उनका 56 मीटिंग्स में 1952 में उसका पहली मीटिंग हुआ था, नवंबर 8 और 9 तारीख को 1952 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसका एजेंडा आइटम है कि टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेस ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ 5-year plan to promote common economic policies in all vital spheres, and number 3 to ensure balanced and rapid development of all parts of the country। अगर इसको हम लोग विशेष रूप से देखने से हमको लगता है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो सेक्टर्स पिछड़े हुआ है, उनको आगे लाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए। हम सब जानते हैं कि इस देश, हमारा देश एग्रीकल्चर पर, इकोनॉमी पर निर्भर है और 60% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर वेजेस पे निर्भर है। तो हमको लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये दो कुछ करेंगे, मगर कुछ नहीं है। उसके बाद ऐसा बोलने का समय नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जिक्र करके उसको खत्म करता हूँ। करते करते हुए आपको 30th नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग का देखने से, वो 90s में हुआ था। वहां पे लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। 43rd NDC मीटिंग 22nd and 24th December 1991। वो जब ये मीटिंग हुआ, इसके बाद आपका जो हम लोग जो कर रहा है कि वैश्वीकरण और जो कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है इस देश में, उसके लिए वो लोग ने अपना पूरा गेट्स को ओपन कर दिया। उसके बाद प्लानिंग, ये एनडीसी का मीटिंग सिर्फ इतना है कि प्लानिंग कमीशन का अप्रोच पेपर अप्रूव करना है,
प्लानिंग कमीशन का मिड टर्म इवैल्यूएशन को अप्रूव करना है और प्लानिंग कमीशन का प्लान 5 ईयर प्लान को अप्रूव करना है, बस इसके लिए सीमित है, उसके अलावा कुछ नहीं। और अभी तक जो 56 एनडीसी का मीटिंग्स हुआ उसमें एक मीटिंग में भी दलित और आदिवासी या मूलवासी बीसीसी का वेलफेयर के बारे में और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और इनको उन लोगों का स्थिति गति कैसा है उसको जांच करने के लिए ये जो 56 मीटिंग्स हुआ उसमें एक बार भी ये चर्चा के लिए विषय नहीं था। ये बहुत अफसोस की बात है। जहां जिस क्षेत्र में 80% लोग जिस क्षेत्र में है उनका बारे में, उनका स्थिति के बारे में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एनडीसी जो 56 मीटिंग्स हुआ, लास्ट मीटिंग हुआ वो 22 अक्टूबर 2011, पिछले महीने, 2 महीने पहले, तब तक एक बार भी जो रियल नीडी पीपल है उनके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। ये एनडीसी का परिस्थिति है। अगर आप प्लानिंग कमीशन का मीटिंग देखने से, प्लानिंग कमीशन रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन करने का, किसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है और कहां से रिसोर्स आ रहा है, कहां जा रहा है। देश में रिसोर्स आ रहा है इनकम टैक्स से, चाहिए वो डायरेक्ट टैक्स है चाहिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो उनका इनकम है और उसके ऊपर निर्भर करके वो क्या करना चाहता है, वो किस सेक्टर में डेवलप करने के लिए वो जो हर एक 5 साल का ये जो प्लान बनाना पड़ता है। मगर साथियों, पिछले अगर 5 वर्ष में अगर पीछे जाएंगे, ये जो इनकम टैक्स जो आय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें प्रति साल कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स के लोग ने एग्जम्पशन दी। 5 लाख करोड़ रुपया प्रति साल जो कॉरपोरेशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं और जो पूंजीवादी हैं, उनका जो कमाई, उसका जो प्रॉफिट है, उसका ऊपर से जो गवर्नमेंट का जो इनकम आना चाहिए, उसमें ऑन एन एवरेज 5 लाख करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने इनकम टैक्स का माफ कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्सेस 5 लाख पर ईयर, 5 लाख करोड़ रुपया का कटौती पड़ गई। मगर वो लोग क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाते आए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आज के स्थिति में देश में 12% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने के लिए अगर आप जो भी बाजार में जाएंगे, आप जो भी खरीदेंगे उसके ऊपर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप सिगरेट खरीदेंगे, बीड़ी खरीदेंगे, आप पेस्ट खरीदेंगे, साबुन खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे उसके ऊपर जो प्रिंटेड अमाउंट है एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो it will take into consideration the profit and various inputs that have gone into the production of that material and providing of that material at that point of time, till that point of time. जिनका पास जो भी अगर जो including the employed people who are in the employment sector, अगर हम सब मैं अगर if you take me as an example, हम प्रति महीने के लिए जो जरूरत पड़ता है घर पे वो सब हम खरीदते हैं। वो सब मैं एक साबुन नहीं खरीदता, एक ही बार जा करके 10-15 साबुन खरीद लेता हूँ, 4-5 टूथपेस्ट खरीद लेता हूँ, 5-10 किलो तेल खरीद लेता हूँ, एक बोरा चावल खरीद लेता हूँ। ऐसा कर करके मैंने मुझे जितना चाहिए वो सब मैंने होलसेल मार्केट में जा करके मैं खरीद लेता हूँ, ताकि मुझको ये एमआरपी से थोड़ा कम दाम में मुझे अपना जो सामान खरीदना चाहता है वो लेने के लिए, थोड़ा उसे टैक्स से बचाने के लिए। और देश में आंकड़ा के सरकार के आंकड़ा का वजह से 60% of the essential commodities are going in the black market. They are not coming into the purview of the tax or accountable exchange of commerce. So who is paying this direct tax? Who is paying more than the MRP? If you take that, that is the people who are living under the below poverty line. जो रोजी
अपना रोजी का मेहनत में निर्भर होकर उसको कमाता है और प्रतिदिन अपना 10 ग्राम तेल खरीदने के लिए जाता है, 1 किलो 2 किलो चावल खरीदने के लिए जाता है, आधा किलो दाल खरीदने के लिए जाता है, वो लोग एमआरपी से भी ज्यादा पैसा वो पे करके वो लोग अपना पैसा सामान को खरीद रहा है। तो साथ ही हम लोग इसलिए एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स हमने बनाया। ठीक है, वहां देश में प्लानिंग कमीशन का एक बीपीएल सेंसस का क्राइटेरिया है, कुछ सेक्शन का कमेटी है, अर्जुन सेन गुप्ता का कमेटी है, फलाना कमेटी, एक एक कमेटी ने एक एक अपना विचारधारा रखा और उसका क्राइटेरिया बनाया। एक कमेटी ने कहा 50% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। सम कमेटी सेड more than 80, nearly 80%. Some people said something. Just ignore all that. Even if you take 25% of this Indian population who are able to earn $0.50 as per these various committees, 25% of the population of India, 22.5 rupees of per day wages, and if you compute that with 12% of direct taxes, it's working out to be nearly 1,64,000 crores of indirect tax payment. मैं 25% का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दलित और आदिवासी जो पॉपुलेशन है that is around 24.2%. I'm not counting the scheduled castes and scheduled tribes who are also paying the direct taxes. I've taken only the indirect taxes being paid by only 25% of the population of this country, which constitute 90% of the scheduled castes and scheduled tribes. And their contribution is 1,64,000 crores. What are we getting out of it? Last year, we got 225 crores as Rajiv Gandhi National Scholarship for Higher Education. Total Ministry of Social Justice and Empowerment का जो scholarship budget है 325 crores post matriculate और matriculate के मिल करके 45,000 crores आपका NREGS है जो flagship program करके पूरा दुनिया मचा रहा है और उसका वजह से भारत का जो economic condition है वो खराब हो रहा है करके हमारा भी जो प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन है Mn.Tanoj वाले अक्सर कहता if NREGS is not there and his statement starts. When we are contributing 1,64,000 crores as only indirect taxes to the government of India, this 45,000 crores of NREGS is for all the people in the country, not only for scheduled caste and scheduled tribe people who are the working in making use of the NREGS program. This 325 crores of scholarships is not only for scheduled caste and scheduled tribe, there are also OBCs are there, physically challenged are there, economically backward classes are there. So in the name of welfare programs, in the name of the welfare budget, they are saying we are giving thousands of crores and lakhs of crores we are spending. But what are we paying? And what are we getting back? So Satya, if you look at these numbers, none of these numbers are our own numbers. They are all government records. If anybody want, I can give you the references of all these numbers. Now come to the point of who is poor. The people who are paying this much of tax, see, if you take this 22.5 rupees per day wage earning person, 100% of his earning is subjected for indirect tax payment. But those people who are salaried, for them there are several means of exemptions under the direct taxes. You have insurance policies under which you can save some money from your tax. You can have your children education policy under which you can save tax. You can have a uniform tax. You can have, there are about 32 heads under which direct tax payments can be exempted to an individual who is a salaried person. Then comes to the industries. In the name of globalization,
to invite the industries, to ensure unemployment, to reduce the unemployment in this country. We have been giving loans which are of from 6 months to 6 years of no interest payments, for free supply of electricity and water, and infrastructure development, plus at the rate of 5 lakh crore per year tax exemptions, which works out to be at least 8 to 10 lakh crores a year. So who is paying to this country? Who is getting benefit of this country? You can make an assessment. Without going into graphic details of many things, I just wanted to focus mostly on the special component plan, which has been a trump card now for the government for the ruling party in the coming elections. Special component plan is a policy guidelines made in the year 1979-80 financial year by the then Prime Minister Indira Gandhi, and that time the member secretary planning commission is the present Prime Minister Manmohan Singh. The fundamental policy of the principle of SCP is to ensure socio-economic development of scheduled castes and scheduled tribes, thereby the atrocities on these two communities will be reduced. When they are reviewing the fourth 5-year plan, it was found the number of atrocities on scheduled castes and scheduled tribes are at a increasing at a high rate, and the reason being is their poverty. So to fill this gap, to bring them up economically, so that the atrocities on these people will be reduced. This is the principle or the policy or the idea behind this policy. What has happened? 1979-80 you introduced this policy, expecting that not only the welfare department, every department in the government should make special efforts for the economic empowerment and economic improvement of the scheduled castes and scheduled tribes, and they should allocate their plan in proportion to the population of the scheduled castes and scheduled tribes, the plan budget. Friends, since then till today, not even 50% of the departments in the country, even in the central government, are implementing the SCP or TSP. Not even 50%. Today there are 83 departments in the government of India. Only 17 departments are making allocations under SCP and TSP, which is not even equivalent to the policy guidelines of the population proportion of the scheduled castes and scheduled tribes. There is a advisor created, post of an advisor created in the Planning Commission of India to monitor the SCP and TSP. And this man is supposed to send, various guidelines from time to time to ensure every state government and every department is implementing the SCP or TSP or not. And the Planning Commission also empowered to reject any state budget or any department or a minister's budget if they don't show the allocations under SCP and TSP vis-a-vis their plan for every financial year. There is not even a single instance of the Planning Commission rejecting or sending back a plan that is being presented to them by a ministry or the state government. Till now, 33 years have passed. Last 33 years, SCP is in vogue. 11th 5-year plan, there is a suggestion to the government of India, unless a statutory status is provided to SCP and TSP, it will not be implemented. And NDF has participated in the midterm review of the 11th 5-year plan in all the meetings, and in every meeting we raised, sir, can you please explain what is the status of providing statutory status to the SCP and TSP? Unfortunately, the answer is a smile. Sorry, you did not do anything.
And unfortunately, another unfortunate thing is, in the 11th 5-year plan, we have a very eminent scholar from our community, Dr. Narendra Jadhav, in the Planning Commission. And who is given the responsibility of social justice and empowerment, apart from other 6 subjects. Dr. Sahab कहता है, अरे भाई रवि, क्या करें? I thought अगर हम प्लानिंग कमीशन में आने से उसको सुधार सकता है, मगर अभी लग रहा है कि उससे बाहर जाने से हम कुछ कर सकते हैं. So friends, with all the efforts of Jadhav Sahab and various Dalit organizations, the 11th plan period, they introduced a task force under the chairmanship of Jadhav Sahab to improve the allocations and expenditure under the SCP and TSP. That is called the task force for improvement of SCP and TSP. Jadhav Sahab ne apna pura, he had several rounds of formal, informal meetings, and he said, I will definitely do something for it. But finally, when the report was out, it's a total surprise. 43 ministries in this country are made non-obligatory to make allocations under SCP, and 46 ministries were made non-obligatory to make allocations under TSP. And they said the rest of the ministries will somehow allocate the SCP and TSP in such a way that your 16.2 and 8.2 of funds will be made available to you. This is a just mathematical game. It's not possible. I don't know how much time I have. Please inform me if I'm exceeding the time. Okay, so that unless आपका पास एक उदाहरण देता हूं, अगर आपके पास 100 करोड़ है, उसमें 16% एससीपी के लिए, 8% टीएसपी के लिए देना है. रख करके उसी प्लान को आप स्पेशल प्रोजेक्ट्स बना करके ये 16% और 8% आप इस्तेमाल करने का. तो किसी को आप 100 करोड़ जैसे छोड़ दीजिए, और किसी को आप बनाएंगे कि आपका जो प्लान बजट है उसमें आप इसको ये जो 25% से लगभग उसको आप ज्यादा कर दीजिए बोलने से उसका मंत्रालय चलने सकता है. मगर प्लानिंग कमीशन के सामने अपना जादव साहब को सामने रख करके हम सबको they made us fools, thinking that scheduled caste people and scheduled tribe people cannot understand their language of economics. I challenge you from the dais. I am not an economist by training, but I can challenge every number and every projection that you make. That is the strength of Ambedkar. Baba Sahib has taught us economics in his every writing. Don't cheat us. Don't make us fools. We have the courage. We know the logic. We know mathematics. We know every philosophy or every plan that you try to fool us. We can understand. Those days have gone. So friends, what do we do now? Now the point of discussion here is the planning commission is planning to purge the Mool Nivasis in the name of poverty line. Yes, they have to do it. It is their interest. As Bhai Sahib in his starting of the discussion he said 3 points: intention of the ruling party, pressure from the public, and interest of the ruling class. It's very simple. It's very clear. If this population really gets their share in the national economy for their development, and if they develop, the ruling class will be altered. The 15% of people, they have to find their jobs elsewhere. Today, out of 83 ministries in the central government, not even a single principal secretary belongs to scheduled caste or scheduled tribe. Out of 135 joint secretaries, only 63 belongs to scheduled caste and scheduled tribe. Who is the policy maker? Who is the planner? Why will they plan for us?
why will they make a policy for us? As much as possible, they will try to fool us. They know the strength of us, thereby they wanted to make use of the statutory bodies as much as possible to fool us, to keep us as in the most, on the receiving side of the pitch. Okay, now coming to the discourses on the poverty line. See, the so-called below poverty line is not a absolute number any time. This is only being an estimate by different people at different points of time to defend the different intentions of the ruling party. One of the most talked committees, NC Saxena committee. NC Saxena's committee is considered to be one of the most rational, objective methodology, committee which has given the methodology to conduct the BPL census. In this committee, there are there are 17 members. Out of 17, there are only 2 scheduled caste officers are there. One Mr. K. Raju and another one is Mr. Amar Singh. Except these 2, out of the rest 15 members, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 belongs to one particular caste, Brahmins. So friends, I don't need to explain. In spite of this, all these members on this report, there are 7 dissent notes on the criteria that is being suggested by this committee. It's also part of the report. All the 7 dissent notes are written by the Brahmins only, that don't accept this criteria of NC Saxena's committee. If it is being accepted, 80% of the population in this country will be marked below, living under below poverty line. So, the Brahmins played their trick by using all technical terms. Terms of reference of the committee doesn't say this, so hence I disagree with the committee report. Terms of reference says this, so I disagree with this report. This is a Rural Development Department committee, hence it cannot be an authentic report for the Planning Commission to take account of it. So I dissent. It's hilarious, these dissent notes. Then they go to, then they finally said, we'll dump this report. Then Arjun Sen committee, Gupta report came. They try to use that. Tell me, in this country, if you are identifying a poverty, a person as a poor, is it only the number of rupees that he or she is earning matters, or the person's caste, region is also matters? I am a person living with 35,000 rupees of monthly salary in Hyderabad, belongs to scheduled caste. If you equate my standard of living with another person who is living in the same Hyderabad with the same 35,000 rupees month salary, I'll tell you the difference. I'll have to pay a house rent of 10,000 rupees. He doesn't have to pay 10,000 rupees of house rent because he has his own ancestral house there. I have to procure a vehicle for me to go to the office and for me to attend to my personal needs. So I have to take a loan to buy a car or a bike. That person doesn't have to buy a car or a bike because he has got already. So like that, if you start comparing, not only people living in the salary with salaries in metropolitan cities, even the villages.
A person who is living with 22.5 rupees a day on village, in a village, a chamar or a bangi or a mahar, is different from a 22.5 rupees is being earned by a Brahmin or an upper caste man. The standard of living will be different. This is thousands of years of this Indian sociology that has taught us. But the people sitting in the planning commission doesn't want to consider the social background, the regional background. They wanted to consider only the arithmetic number of rupees that is being earned. And they wanted to ensure, and now another criteria is they don't want to ensure, to count not even the money, they wanted to count the number of calories of food intake per day by person and the amount of money that goes into it. So now the percentage, the per capita income is gone as a criteria. Now they are looking at the per capita expenditure as a criteria. So if you consider per capita expenditure as a criteria to identify poor, we are spending all our 100% of earnings, maybe it is 10 rupees or 1000 rupees. But there, those people are not spending all their money for the daily essential commodities, because they have already sources from which they can, by which they can make savings. So whether you take per capita income or per capita expenditure, it is the social background, it is the regional background, it is the which generation of employment, all these things matter to identify poverty. But Government of India, the present Planning Commission or the NDC doesn't want to consider all these things. Now there is another mafia which is talking about the people, the marginalized and downtrodden or poor people in this country. This is again another statutory body. NAC, National Advisory Council. National Advisory Council is a statutory body created to guide the UPA chairperson in making decisions or recommending the Government of India on matters related to the upliftment of or in the view of the marginalized sections of the country. Who are there? Who are the members of the National Advisory Council? How many scheduled caste, scheduled tribe and backward caste people are there in the NAC? What kind of policies they have brought? What kind of policies they have recommended? NREGS is one. Right to information is two. And they have been struggling to introduce food security bill. And now they have last one year, they are doing the circus on statutory status to SCP and TSP. It's a circus. Since I worked more on SCP, I'll tell you, I will quote you two very important people's statements on the SCP implementation. Most of you must have heard about he's a professor from JNU, economist, Prabhat Patnaik. Professor Prabhat Patnaik is a known leftist economist. He was the State Planning Board chairman of Kerala for 2 terms. Recently in a meeting organized in the context of 12th Five-Year Plan, he said, in the plan there is a notional expenditure, notional allocation, notional expenditure. There is an item called notional allocation and notional expenditure that is called SCP and TSP. In front of many senior IAS officers, including NC Saxena Saab was there. He said, it's only a notion. There is no money being spent under, there is no single rupee being allocated physically under SCP or TSP and is being spent. It's only a notional allocation, notional expenditure. It's in a paper-based mathematics calculation of percentages done by a UDC in every department. This is a statement of Professor Prabhat Patnaik. And I like to quote one more man. Mr. Kaki Madhav Rao. He is a retired Chief Secretary from Andhra Pradesh. He is a scheduled caste officer
who is responsible for 12 budgets of government of Andhra Pradesh. In a meeting he said, in a public meeting, budget making in the state is a joke. Finance secretary is a joker. And budget formulation in the center is a tragedy because nobody listens to anybody. So no policy, no guidelines, no planning commission, no NDC, no poor, no development of the poor of the people, poor in the country. So everything goes around the crorepattis who are sitting in the parliament and in the assembly. Various assemblies. So this is the state of affairs with regard to the budget and planning and the status of affairs at the national level, at the state levels. With due respect to our Maharashtra Chief Secretary, but I don't know whether he's still there or not, Ratnakar sir. I met him a couple of times. When he became Chief Secretary, I said, "Sir, Maharashtra is being regarded as the best state in implementing SCP and TSP, but we know the inside story. Can something be done about it?" Ratnakar sir said, "Ravi, I have only 4 months to serve as a Chief Secretary, so I cannot do much." And another biggest joke about the Planning Commission. The Planning Commission plan period, the so-called 5-year plans, this year, 2012, we are starting the 12th plan. So it goes up to 2017. But in between 2014, we have general election. So the ruling government, whatever the plan document says, they will try to appease the voters in such a way that they retain their power. So the Planning Commission recommendations is into the shelf. Then 2014, whoever comes into the power, if the same government comes, they might look at it, but if a new government comes, to retain their power coming in the coming election, they'll keep this as aside and they'll do whatever they want. So the planning cycle and the election cycle, they doesn't match at all. As long as they doesn't match, we don't have to have any hopes on the so-called Planning Commission. This is only a futile exercise to fool the people like us and to engage people like me more so that we don't contribute ourselves into the public discourse. Because we'll get busy with looking at the previous plan, coming plan and current plan, and we don't interact with common people like you who can really fight for the allocations and expenditure and the income of the government, so that the sizable community or the learned community of the scheduled castes and scheduled tribes can be made busy looking at these fictitious numbers and plans. So the real information doesn't go to the masses, so they can play whatever the politics they want. Since the time is not permitting, I'm concluding here. Otherwise, I can show you every financial year just before the election year, you will see suddenly the SCP and TSP allocations are increasing. And immediately after the election year is over, the SCP TSP allocations go down. Till now, from 1980 to 2011, the expenditure under SCP has never crossed 8% of the total budget, whereas it's supposed to be 60%. Has never crossed. And TSP has never crossed 4.5%, which is supposed to be 8% minimum. So friends, this is where I'm concluding, because this is a discussion, dais for discussion, and there are people who can reflect. This is the real story of the Planning Commission. So now we can say what it is doing. It is trying to purge the Molunivasi Bhojans in the name of planning and poor, or what is something I think we can discuss and understand. Thank you very much. Once again, I thank the organizers for giving me this opportunity, and I feel really proud to speak from this dais, because as a Dalit
I have never seen a big gathering of this much people, and those who are of my people. So once again, I thank the organizers for giving me this opportunity, and I am with you anytime, any activist or any leader or at any stage, if whenever you want information or numbers with respect to the Planning Commission, SCP and TSP, NDF is open. It is your organization. The research what we are doing is meant for all of us. Thank you. Jai Bhim. Thank you very much, Dr. Ravikumar. So Dr. Ravikumar has given detailed report how this planning commission is playing and how it is being projected for the public, and how government is pulling Bahujan Samaj. So full details he has given. So I once again thank him. So now I request Mr. M. Siddiqui Jamal to put forward his views on this subject.